Hi students, Namaste. Today we are going to deal with the electrostatic potential and capacitance. Carrying on, in the last lecture we have derived the expression for electric potential at a point due to single charge. What is the electric potential? How electric potential is to be calculated for the group of charges? All are discussed very well in the last lecture. Today I am going to derive the expression for electric potential at any point due to electric dipole. At any point due to electric dipole. Electric potential at any point due to electric dipole. Look up at the board. Simply, we consider a dipole AB. We consider a dipole AB of length 12 with the center O. O as the center. As we know, dipole is what? Dipole, the two equal and opposite charges separated at certain distance forms electric dipole. नाम से लग रहा है डाइपोल, दो पोल होंगे, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर सेपरेट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाइपोल. दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल. वी आर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, electric potential. Electric field intensity is already covered. Electric potential at a point due to this dipole. Suppose M be our point of observation. Suppose this one. M be our point of observation. Distant r from the center of dipole. Look up at the board. We are to calculate a general expression for electric potential at any point due to electric dipole. After having the general expression, we will go for the equatorial point as well as the axial point, as we have did already in the electric field intensity topic. Simply, so we consider the point M as the point of observation, distant smaller distance from center O of the dipole, and the distance of the point M from charge minus Q is the R1, and distance of the point of observation from plus Q charge is the R2. We consider the point M to be the point of observation, distant R from the center O of the dipole, and the distance of point of observation from the minus Q charge and plus Q charge is the R1 and R2. Simply, as potential at point M due minus Q charge at A, okay, is V1 equal 1 upon 4 pi epsilon 0 minus Q1 by minus Q upon R1. Simply, the sign minus Q is to be taken because we are dealing with the potential which is a scalar quantity. So minus Q by R1. Similarly, potential at point M due to charge plus Q at A. Similarly, potential at point M due to charge plus Q at A is V2 equal 1 by 4 pi epsilon 0 plus Q by R.
simply. Now potential at electric potential at point M due to electric dipole is given by V equal V1 plus V2 by superposition principle. So we can say V equal 1 by 4 pi epsilon 0 minus Q by R1 plus Q by R2. We can say Q upon 4 pi epsilon 0 1 upon R2 minus 1 upon R1. This is the electric potential at point. This is the electric potential at point of observation M due to charge minus Q and plus Q, that is due to hold the dipole. Simple. We are to introduce the distance small l and r in this expression. We are to introduce the displacement, the length of the dipole small l and distance r in this expression. How to do this? Now look up at the board. Simply in figure, look at in the figure, we extend OM backward. Look at here. We extend OM backward and we draw a perpendicular from O which meet the OM at C. Listen again. We draw perpendicular from A which meets OM at C produced backward. We draw a perpendicular from A which meets OM produced backward at point C. Similarly, we draw a perpendicular from point B which meet the OM at point D. Okay, and as we have already assumed that the electric dipole moment vector makes an angle theta with the line joining center to the point of observation. Why we are doing so? Only to write the R2 and R1 in terms of length L of dipole. Length L, the whole length of the dipole is what? 2L. So we can, this one is the L, 2L. To write down the distance R2 and R1 in terms of the length of the dipole and distance from center to the observation point, we are doing so. What we have to do here? We draw a perpendicular from A which we draw a perpendicular from A. We draw a perpendicular from A which meets OM produced backward at C, and also we draw a perpendicular from B which meet OM at D. Okay. Now
we can say R1 is equal to what? AM. R1 is AM, which is approximately equal to the CM. Look up at the board. R1, which is AM, is approximate, can be taken as equal to CM, which is equal to CM is what? CO plus OP. CO plus OP. And R2 equal BM, which approximate equal to the DM. That means we can say OM minus OD. OM minus OD. CO plus OM we can say, and OM minus OD. Okay, R1 and R2. In triangle AOC, cos theta equal, this is also theta, cos theta equal base OC upon hypo is what? OA. So we can say OC upon L. From here OC equal L cos theta. So we can say OC equal L cos theta. Clear? Look up at the board. OC equal L cos theta. And also in triangle BOD, cos theta equal base OB upon hypo. We can say base is OD upon hypo OB. OD upon L. So OD is equal to what? L cos theta. Hence R1 can be rewritten as CO plus OM, means CO is what? L cos theta plus R, and R2 is equal to OM minus OD. That means R minus L cos theta. Look up at the board. R minus L cos theta. Okay? R minus L cos theta. This is the value of R1 and R2 in terms of L and R, which is required. हम यही तो चाहते थे कि R1 और R2 को L और R के टर्म में करें. यहां तक बिंदास समझ गए थे. V इक्वल टू V1 प्लस V2. V1 मतलब at point M potential due to charge at A. V2 is at point M potential due to charge plus Q. सिंपली सुपरपोजिशन लगा के आपने कर लिया. यही तो पहले प्रूविंग थी. इधर का जो था तो कल रायता था. मेन इक्वेशन तो यही है. कुछ नहीं इरेज है, सब लिखा है बोर्ड पर. V इक्वल टू V1 प्लस V2 इनिशियल था. फिर इतना रायता क्यों फैलाना पड़ा? हमारा मोटो था कि हम R1 और R2 को स्मॉल l और थीटा r के टर्म्स में लिखेंगे, जिसके लिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो डॉटेड है आप देख सकते हैं. डॉटेड है दिस वन. फ्रॉम O टू O से हमने ड्रॉ किया, A से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम A माइनस Q चार्ज वाले पॉइंट A से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. जो लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मींस सेंटर और ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन से पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर C पर मिलता है. और यहां से B से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ट्रीट कर लिया उसको एंगल थीम लगा के. अब लाके आप पुट कर देना है. सिंपली हो गया. दैट्स ऑल. ये नोट कर ले एक बार. आप जो चाहे इसमें से नोट कर सकते हैं. जो चाहे आप नोट कर ले, नोट्स बना ले आप जो चाहे. 2 मिनट समझ रहा हूं मैं आपको. पूरा लिखा हुआ, कुछ नहीं इरेज है. सर उधर लेफ्ट का नीचे आपने इरेज कर दिया, कुछ नहीं. वो लिखा तो है V इक्वल टू V1 प्लस V2. मेन तो यही है.
चलिए स्वागत है वापस। तो हमारा मोटो क्या था, अब तक आप नोट कर लिए मुझे लगता है। नोट्स बनाते चले, प्रूविंग्स अच्छी हैं। यहाँ से शुरू हुआ पॉइंट एम पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर वो हमने रेड में ड्रॉ, वो ग्रीन कलर के पेन से लिखा हुआ था परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर दिस वन इज डिस्कस्ड। नोट कर ली इजीली, आराम से नोट कर लें। प्रूविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ग्रीन सही दिख तो रहा है, पढ़ा लिख नहीं सकता दिख रहा है। Now turn goes for the final touch of this proving। आइए वैल्यूज को पुट करना है, कुछ खास नहीं करना है हमने, वैल्यूज केवल पुट करनी है यहां। फ्रॉम फर्स्ट V equal 1 upon 4 pi Q upon 4 pi epsilon 0, 1 upon R2 means 1 upon R minus L cos theta, this is the R2, and minus 1 upon R plus L cos theta. Putting the value of R2 and R1, V equal Q upon epsilon 4 pi epsilon 0, R plus L cos theta minus R minus L cos theta whole upon R minus L cos theta into R plus L cos theta. So easily we can say Q upon 4 pi epsilon 0. This is the cancel out R and R. So L 2L cos theta upon R square minus L square cos square theta. As we know, dipole moment P equal Q into 2L. So V equal 1 upon 4 pi epsilon 0 P cos theta upon R square minus L square cos square theta is the final expression for electric potential at any point due to electric dipole. Electric potential at any point due to electric dipole. Look up at the board simply. This is the final expression for the electric potential at any point due to electric dipole. V equal 1 upon 4 pi epsilon 0 P cos theta upon R square minus L square cos square theta. 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, आराम से आप नोट कर लें। नोट्स बगल में बनाते चलें। जिम्मेदारियां बड़ी हैं, सिलेबस बड़ा है, काम उतना ही करना है, तो भाग नहीं सकते आप। थीम हमारा वही पुराना रहेगा, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, हार्ड वर्क एंड द फॉर्म डिटर्मिनेशन विल लीड टू अ पॉजिटिव आउटकम। लगातार आपको प्रयास करना होगा, बगल में नोट्स रखते रहे और प्रूविंग्स नोट करते चले। नाउ वी कंसीडर द केसेस। फाइनली आपने क्या पाया? फाइनली आपने देखा कि V इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon 0 P cos theta upon R square minus L square cos square theta. If R is much greater than R, then
V equal 1 upon 4 pi epsilon 0 P cos theta upon R square. L is much less than R. So L square can be neglected in comparison to the R square. So this one is the P cos theta upon R square. Since P cos theta is what? P vector dot R cap, where R cap is unit vector, where R cap is unit vector. So V equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 P vector dot R cap upon R square. It also can be written like this one. So we obtain these. This is the potential at any point due to electric dipole. In this, we treat for the axial point as well as the equatorial point from the general expression. Within the general expression, we can see it. Now, if point M lies on axial line of dipole, point M lies on axial line of dipole, that is theta equal क्या 0. थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट को मिलाने वाली लाइन. तो जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट यही चला आएगा, सेंटर से लाइन मिलाइएगा तो उसी पर से जाएगा ना. तो ऑब्वियसली बात है थीटा क्या होगा? 0 होगा. तो वही कह रहे हैं कि पॉइंट एम अगर एक्सियल पॉइंट हो जाए थीटा 0 होगा. सो v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन r स्क्वायर इज द फॉर्मूला फ्रॉम दिस वन p अपॉन r स्क्वायर. ये सारी डिस्कशन किसके लिए हो रही है? सारा डिस्कशन उसके लिए जब r मच ग्रेटर देन l है. सब कुछ डिस्कशन उसी के लिए. v इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन r स्क्वायर. सेकंड केस, if point M lies on equatorial line, that is थीटा कितना होगा? 0 डिग्री. इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा? सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन. मान लो यहां आ गया पॉइंट M, तो ज्वाइन करेंगे तो एंगल कितना बनाएगा? P वेक्टर से ये लाइन 90 बनाएगी. तो वही कह रहे हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा. तो ऐसे केस में चूंकि cos 90 की वैल्यू 0, तो पूरा का पूरा v कितना आ गया? 0. सो पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0. नाउ द प्रूविंग इज कवर्ड. ऑल द टॉपिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल इज कवर्ड, फुल्ली कवर्ड. क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, आराम से ये देख ले, नोट कर ले. मैं आपको समझ दे रहा हूं, 2 मिनट नोट कर लीजिए.
आई होप कि आप नोट कर चुके होंगे, छोटी सी प्रूविंग थी 4 लाइंस की। नाउ टर्न गोज फॉर द नेक्स्ट प्रूविंग, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, बड़ा अच्छा ही प्रूविंग्स कंसेक्यूटिव ईयर्स में आया भी है बोर्ड में और कई दफे यूज है इसका पूरे प्रूविंग। टॉपिक क्या है? टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ई वेक्टर E and V, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, मतलब प्रूफ फॉर किसका प्रूफ करना है? E इक्वल माइनस dV अपॉन dr की प्रूविंग करनी है। E इक्वल माइनस dV अपॉन dr की प्रूविंग करनी है। कैसे होगा आप देखिए, वी कंसीडर 2 पॉइंट्स A and B in the electric field of charge plus Q placed, चार्ज प्लस Q, ठीक है, ये चार्ज प्लस Q रहा। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हमने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ए लिया एंड सेकेंड पॉइंट बी लिया। मैंने पॉइंट ए डिस्टेंस r पर था यहां से, और हमने ये मान लिया we assume that point A and B are close. Point A and B are close because so that electric field in between is uniform. Okay. Now, if a test charge Q0 is placed at point A, electric force acting on Q0 placed at A is F equal to Q naught E. This is the electric force, F vector. पॉजिटिव चार्ज था तो रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड F0 इक्वल टू F इक्वल टू Q नॉट E. Now, if Q0 test charge Q0 is moved from point A to point B, then work done in doing so moved from point A